Hello everyone, this is Bhavijan from MSIT College. After 2 months, I am posting this video showing that I am still trying to improve my communication skills. My hair is all messed up as you can see. I am trying to improve myself by making these videos. Throughout these last 2 months, I am not able to bring consistency due to winter season, as you know, bed stuck, laziness running around, and I have created many distractions. Also, I tried my best and worked so hard to achieve my goals, and I think I am quite ahead of my path. I moved too many steps ahead, so I think my process is going smooth. But there are still distractions, there are still things that I have to work upon it. For example, communication skills. That's why I'm making this video from this book. As you can see, this book, 48 Laws of Power, is one of my best purchased books ever. Although I have purchased only two books, which one is previous one is Atomic Habits, and this is the 48 Laws of Power book that I have purchased. Its price is 700 rupees, but I have bought in 200 rupees because it's a pirated copy, and from a local bargaining, as you can say. However, this book does not contain anything which is cut from the original book, the original 700 rupees book. So I think this is a worth purchase. You can buy this online, or I suggest go for a cheaper one, because you have to read it, not to frame it. Obviously, a something book lover like me would want to have a hardcover of this book, so you have to pay 700 for that, and you have to be careful because it might think a waste of money, as you can get a cheaper version because you have to read it. Also, some people suggest, is there a ebooks in present in or not? Yes, ebooks are present of this version. All the books you can read, for example, Atomic Habits, Psychology of Money, these 48 Laws of Power, many books. Do appreciate Mark Manson's books, Robert Greene's other books, Power of Seduction, Art of War, Mastery. Ebooks are available free on the internet. You have to search and get. However, some people like me not get the feel of reading an ebook by scrolling down the PDF. मुझे कभी भी पसंद नहीं है स्क्रॉल करना. मेरे को पेजेस पलट के बुक पढ़ने में अच्छा लगता है. जैसे ये पेजेस है, मेरे को इनको राइट करके इनको इन पे एक्सप्लेनेशन लिखना है, इनको पेन से मार्क करना, ठीक है, पन्ने पलट के बार बार लाइन बाय लाइन ऐसे टच करना, मुझे ये पसंद है और इसीलिए मैं कर भी लेता हूँ. ई बुक्स में मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता. सो समवन लाइक मी should prefer a hard copy of this book. With that said, मैंने इसके 15 लॉज पढ़ लिए हैं. हालांकि मैंने इसके 3 ही लॉज बनाए. So let's record the fourth law of this 48 laws of power book, which says always say less than what's necessary. इसका मतलब क्या है? आप हमेशा वो चीज़ बोलो जो ज़रूरी है. ज़्यादा घुमा के ज़्यादा चीज़ें रिवील करके मत बोलो. इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ आप 5-10 लाइनों में बोल सकते हो, उसको 2 लाइनों में बोलो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये बताना है कि गोवा जाना है हमें, तो गोवा जाने की इतनी सारी चीज़ें मत बताओ कि ये है, मेरे पापा भी गए हैं, वो सब भी है, वहाँ पे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा. नहीं, इतना चीज़ नहीं है. आपको सीधा ये पॉइंट बतानी, गोवा चलते हैं, वेदर अच्छा है, डिस्काउंट मिल सकते हैं, काम खत्म. द मोर कॉमन यू अपीयर, द मोर यू स्पीक, द मोर कॉमन यू अपीयर, एंड रिवील योर कार्ड्स टू योर एनिमीज. Everything everything you say gives idea to the enemy about who you are. It's important. That's why it is said that tongue is a beast. You have to tame it, otherwise it will go berserk or wild, you can say. If you
do not control your tongue. If you can't control your voice, your communication, then you are not a successful person. Kinda difficult, but once you achieve this, you are at top level of your reputation, which is the next point on this 48 laws of power, which is important to build reputation. Each of these laws are connected to each other. Now, let's say, for example, a person asks you, there are there are many ways. There is a situation where you have to speak too much, but you have to say little. For example, someone who asks you a dumb question, like I said, there is a manipulation video. In order to reveal information, you have to ask some dumb questions. For example, um, what do you think about stocks? Is that we have to buy a part of a company, or is that we have to buy stocks for enjoyable purposes? Anything, whatever. The person who is in interest in that field, who is educated in that field, will correct you, because human brain is tend to wire in such a way that corrects people. He will try to correct you whatever way possible. That's the way. Its reverse can be true. Suppose you are good in one field, and some other person asks a stupid question, anything, then your mind, because you are also human, how no matter how smart you are, तुम भी एक इंसान हो, तुम ज़रूरी नहीं है सही चीज़ें बोल सकते हो, तुम्हारा माइंड भी एट द एंड उसको करेक्ट करने में लगा रहेगा. इट कैन बी दिस. सेकेंड, इट कैन बी थ्रू फ्लैटरी, कैन बी थ्रू सिंपथी. क्योंकि इमोशनल ये मेलो ड्रामा करके, आंसू टपका के, मगरमच्छ के आंसू टपका के इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं लोग. यस, इट कैन बी डन. इट कैन बी थ्रू गिफ्ट्स. Gifts, which is another law which can be discussed in future videos, that how we can use this gifts, compliments, doing favors for them. Okay? These always. It can be in the case of conflicts, whether there is a conflict between them. So you have, for example, the third person who created the conflict, but you didn't know. Person A and person B आर फाइटिंग टूवर्ड्स ईच अदर. दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और कर रखा है पर्सन सी ने, लेकिन ए और बी को पता नहीं है. उनको लगा ये एक तू मैं चल रही है, और वही सी को, क्योंकि सी इनका दोस्त है, क्लोज दोस्त है, वही इनको दूसरे पर्सन बी की कमज़ोरियाँ बता रहा है. वही बी सी को ए की कमज़ोरियाँ बता रहा है. इसमें किसका फ़ायदा हुआ? सी का. सो ऐसे टाइप के लोग बहुत मिलेंगे, और यही है मैनिपुलेटर्स कमाल के. ऐसी ही चीज़ आपके साथ होगी. आपको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील करने का मौका मिलेगा, पर आपको नहीं करना. ऑल यू हैव टू डू स्पीक वेरी लेस, कीप क्वाइट, डू नॉट से अ सिंगल वर्ड, जस्ट गिव डायरेक्ट आंसर. इन सम केसेस which is necessary to communicate, try to deviate from the path. Let's go back to law number 3. The third law from this book, it said never reveal your intentions. So you say in a proper way कि आप अपने इंटेंशंस दूसरों को बताओ मत कि क्या करना चाहते हैं. उसका प्लान ये है कि मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को इसमें ये इन्वेस्ट करना है, ये सब है. तो दूसरे को पता नहीं चले, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा. हो सकता है आपकी प्रमोशन खा जाएगा वो, कि ये कंपनी छोड़ देगा, वो सब है. तो आपको ये कहना है कि नहीं, ये कंपनी का ये काम है, उस चीज़ के हिसाब से, मतलब बात को ऐसे घुमा लो कि आपकी काम भी निकल जाए और दूसरे वाले को पता भी ना चले. क्रिएट अ स्मोक स्क्रीन. इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम लॉ नंबर 3, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करनी है. सो ये बहुत सारे तरीके हैं. ऑल्सो देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस. इट्स काइंड हार्ड, बट अगर ये लॉ 4 के साथ आपने इमोशंस कंट्रोल करना कर लिया तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे. तो लॉ नंबर 3 की तरह ही 3 चीज़ फॉलो होगी. लॉ नंबर 3 में क्या होता है? क्रिएट स्मोक स्क्रीन सो दैट दे विल बिकम कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. पर
इस चीज़ को हर बार ट्राई नहीं करना. देयर इज अ रीज़न. इफ़ यू डू दिस टू ऑफन, तो लोग भी स्मार्ट है. अगर तुम अपने आप को स्मार्ट कंसिडर करोगे, देन यू आर द बिगेस्ट लूजर. यू हैव टू कंसिडर whole world as smart, and you have to be smarter than them. You have to consider their perspective also. So sometimes you have to act a foolish also. By how we can act some foolish? You can talk anything beyond your topic, beyond what you are heading to, beyond your outcome. You can act foolish. You can laugh at any point. You can cry at any point. Not too many times, just some point. So that the enemy, तो सामने वाला पर्सन है, वो तुम्हें देख के सोचेगा तुम वीक हो. एंड यही सबसे बड़ी मैनिपुलेटिव पावर है. मैनिपुलेटिव पावर की सबसे बड़ी ये चीज़ यही है कि अपने आप को वीक कंसिडर करवाना है दूसरों के सामने, ताकि उसको लगे कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करना है, पर एट दी एंड तुम उससे मैनिपुलेट करें. So that's from my side, from the 4th law of 48 laws of power. मिलते हैं कल. होप कि कल रिकॉर्ड कर सकूँ मैं. लॉ नंबर 5 रिवील करूँगा फ्रॉम दिस बुक, द पावरफुल बुक 48 laws of power. Give it a read. It's a very good book. You will learn more from it, and you will even learn the reality of this whole world, maybe. So thank you so much. See you tomorrow.